नहीं तांकर एक्सपीरियंस कारण या पूर्वर जितेबले भी एटलिस्ट अंडर दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जितेबले भी टेररिस्ट अटैक होती इंडिया रे immediately within a span of 7 to 10 days India has responded with a military action be it Pathankot of 2016 be it Uri of 2016 be it Pulwama of 2019 tenu Pakistan suffers from this anxiety of nakedness कि जितेबले भी इंडिया चाहिए सेतेबले इट कैन टेक वेरी स्ट्रॉन्ग रिप्रेसिव मेजर्स स्ट्रॉन्ग काउंटर रिप्रेजल मेजर्स एगेंस्ट पाकिस्तान तेणु से निद हजि जाइए कारण से माने जानती जे ये जो टेरर स्ट्राइकटा है यहाँ इनडायरेक्ट इनवॉल्वमेंट रही एटा सत जे तांकर जो मॉड्यूल सब अच्छी ए रेजिस्टेंस फोर्स हो बा मेनी नेम्स एगुड़ा सब ऑफशूट्स ऑफ देयर मेन ऑर्गेनाइजेशन जो लश्करी ताइबा जमात उद दावा जोटा कि पीपल लाइक हाफिज सईद मसूद अजहर ये माने चलती एंड एटा सर्वविदित कि ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर लीडर्स दे ऑपरेट फ्रॉम पाकिस्तान विथ इंप्यूनिटी तेणु यही जो ट्रूथटा जेहेतु अच्छी एंड इंडिया मिलिटरी एक्शन नेबार प्रोपेंसिटी पाकिस्तान जानी दैट इज वाई द फियर दैट इज वाई द एंजाइटी किंतु इंडिया इज नॉट ए नॉट एन इरेस्पॉन्सिबल स्टेट आम डे वन रु डिक्लेयर कर व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर आमर ऑब्जेक्टिव हूँ जे फ्यूचर रे केमिति एभली अटैक न हो सो आम से स्टेपटा नब व्हिच इज कॉल्ड काउंटर टेररिज्म मेजर्स एंड तार वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेजर इज दैट आमे से टेररिज्म नेटवर्क टाक ध्वंस करूँ बोथ दिस साइड ऑफ द बॉर्डर एंड द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर यही पटरे जो नेटवर्क अच्छी दैट कंसिस्ट प्राइमरीली द स्लीपर सेल्स तेणु से स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई कर एलिमिनेट करवा इज द डोमेस्टिक एक्टिविटी नाउ रिमेन्स से जो मैंने हैंडल करती से जो मैंने ट्रेन करती से जो मैंने लॉन्च करती दे आर एजेंसीज ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान ता भितर पाकिस्तान मिलिटरी एजेंट्स अच्छा एंड ता भितर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक हाफिज सईद एंड मसूद अजहर अच्छा तेणु बर्तमान इंडियन प्राइम मिनिस्टर जहाँ डिक्लेयर कर जोटा जो इंडियन आर्मी को फुल फ्रीडम दि जाइए इज टू जीरो इन ऑन दीज हैंडलर्स एंड देयर टेरर नेटवर्क्स so that we can take action to eliminate those networks and we can eliminate those elements who are organizing these kind of terror activities tenu amar jo bhi strike habo it would be a replica of either post Uri attack or post Pulwama attack now Pakistan ta tarafru jo steps nଉଛି that has also to be analyzed Pakistan kon karichi पाकिस्तान जेहेतु एक्सपीरियंस अच्छी दैट इंडिया कैन अंडरटेक ए क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक सेटा को प्रिवेंट करने पाकिस्तान एक्सपीडिशियसली हैज सस्पेंडेड द शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करवा माने द एंटायर बॉर्डर नाउ बिकम्स अनस्टेबल एंड डीरेकग्नाइज्ड सो पाकिस्तानी आर्मी कैन फायर एट इंडियन साइड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर जोटा कि पाकिस्तान आर्मी बर्तमान करुच्ची तार स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल फॉलोआउट बा इम्प्लिकेशन हो दैट इन पाकिस्तान आर्मी एटा करुच्ची टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर पॉसिबल सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडियन आर्मी ऑन द लॉन्च पैड्स टेरर लॉन्च पैड्स सो आपन कहि परिबे इट्स ए काइंड ऑफ कवर दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द लॉन्च पैड्स ऑपरेटिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर सो यही समय जो बिल्डअप चलता दैट इंडिया विल टेक ए स्टेप व्हिच इंडिया विल डेफिनेटली टेक बट only on the basis of credible intelligence information gathered by the intelligence agencies एमती कौन सी बाधकता नहीं कि आमको सांगे सांगे अटैक करने पड़ो दैट्स नॉट प्रूडेंट माने जस्ट टू फाइट ए वार फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग ए वार इज नेवर प्रूडेंट सो आमर वार फाइटिंग कैपेबिलिटी रही बट वी विल फाइट द वार विथ ए पर्पस दैट इज टू एलिमिनेट द टेरर थ्रेट अगेंस्ट अस and in order to do that if need arises we will strike deep inside Pakistan सेटा हम आगुर डेमोन्स्ट्रेट करिछु किंतु वर्तमान जो बिल्ड अप चलतला जोतरे के शिथिलता देखा जे न्यूक्लियर बम अछि एथरे भारतर ना रहिछि ये भारत पई हम पाखरे एते मिसाइल अछि एमन जेतळे एई रिएक्शन दउचंती तो कम से कम साधारण लोकटिया को बुझिबा को नाराज सर किंतु पाकिस्तान आगे कोन सब चैलेंज रहिछि एथमे पचल सर पाकिस्तान ने गोटे नेगेटिव सेंटिमेंट काम करूछि आपण देखंतु मुनीर को विरोध करा जाउछि सेठी खाइबा को नाही बिजुली नाही लोक माने पानी पाउनांती ए नेगेटिव माइंडसेट
बजेट भितर पाकिस्तान सतरे कौन युद्ध पे आगेब शुणु पाकिस्तान रो प्रॉब्लम होची देयर इज ए डुअलिटी इन देयर लीडरशिप आपण ए जो सब कथा कहले एगुड़ा अफेक्ट करे द सिविलियन लीडर हु आर देयर इन पाकिस्तान नॉमिनली हेले भी शहबाज शरीफ इज द प्राइम मिनिस्टर all the international pressure one can exert on the civilian leadership domestic economic problems one can raise against the civilian leadership किंतु ए जो इंडिया अफेयर्स पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया is particularly handled by the military तेणु से प्रॉब्लम आम जिते प्रेशर एक्सर्ट कले भी पाकिस्तान जिते प्रोब्लेम रे थिले भी पाकिस्तान आर्मी रो एजेंडा केबे भी कॉम्प्रोमाइज्ड हेनी आपण जुल्फिकर अली भुट्टोंकर स्टेटमेंट मन पकांतु we will eat we will cut 1000 we will inflict 1000 cuts on India then तापर जो statement we will eat grass but we will produce nuclear weapons to fight India so look at the resolve the military resolve of Pakistan सेटा होची issue we can deal with the Pakistan civilian government but that is to no use so long as terrorist activity of Pakistan are concerned से प्रॉब्लम जे आम जिते भी पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करने चेष्टा करें पाकिस्तान सहित अल्टीमेटली इट इज ऑलवेज सबोटाइज बाय द पाकिस्तान मिलिटरी व्हिच हैज हिस्टोरिकल काइंड ऑफ दैट टू इंडिया इन एवरी वार तेणु 71 को से भूली पार ना सो दे हैव देयर एजेंडा से मैंने सेटा को प्रमोट करूछंती एंड दे find able they find kind of eager audience in Kashmir both this side and that side of the border to carry out their agenda तेणु आमर प्राइमरी एक्टिविटी हवा उचित दे आम साइड रे on our side आम एभली एनवायरनमेंट क्रिएट करिवु दैट दिस काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज becomes delegitimized they are they are hated and they are reported the people don't accept them because आज पर्यंत जहाँ भी कहले existence of sleeper cells in so many numbers indicate कि there is some kind of facilitation happening domestically that needs to be worked on diligently and that needs to be eliminated NIA रो तदंत को किभଳି देखुछन सर कारण मूलरू स्पष्ट हो जाइतला कि स्लीपर सेल काम करचंती सेमान को ठिकाना मध्य पाइतला ई गोटे बड़ आतंकवादी नेटवर्क को खोजी पारिबो ना या पछरे उद्देश्य कोन देखन सर नहीं नहीं एनआईए रो इन्वेस्टिगेशन तो टू फोल्ड गोटे हूँ इमिडिएटली जो इनसीडेंटा हो गला तार कारण को खोजी बाहर करवा एवं तार सोर्स को खोजी बाहर करवा ता सहित फ्यूचर टेरर अटैक को प्रिवेंट करने पाई जो स्लीपर सेल मैंने ऑपरेट करूँ न्यूट्रलाइज करवा ए सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी कहीं जिते आम जहाँ भी कहले there is a kind of sentiment one kind of sentiment in Kashmir जोटा कि किछि मात्रा रे हेले भी ideologically support जोगा to these kind of elements जो मनकरी anti India sentiments रही छी कश्मीर पूरा स्थिर नुहे आमको ये जिनस गुड़ा मानवा पे पड़ो तेणु यही एनवायरनमेंट रे जोटी लोकल कम्युनिटी रे किछि मात्रा रे सपोर्ट रही छी केमिति ता भितर आम स्लीपर सेल को एलिमिनेट करवा गोटे मात्र इफेक्टिव वे इज दैट वी विन ओवर द कम्युनिटी इन कश्मीर जेमती बर्तमान यही टेरर अटैक पर यूनाइटेड होती से माने बुझीचंती जे टेररिज्म इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट इन एनी फॉर्म तो यही मोमेंटम यही सेंटिमेंट ऊपर कल्टिवेट करी इफ वी कैन विन ओवर द कश्मीरी कम्युनिटी इन टोटो कारण वी नॉट ओनली क्लेम कश्मीर वी ऑल्सो क्लेम कश्मीरीज so Kashmiris jodi can be won over then these sleeper cells will not find any space to operate tenu NIA ro investigation a second aspect is more important the first aspect information already they have collected from the scene जो दिन हेतला जो दिन सन जे पहुंची थिले तापर they are pursuing the leads जोठी भी दरकार पड़ो जहाँ मो प्रीवियस स्पीकर को गोटे इज्राएल टाइप रो स्ट्राइक नो नो इज्राएल टाइप रो स्ट्राइक नो आउ टिके ताको डिफाइन कर दपे पड़ो मोसाद स्टाइल स्ट्राइक जोठी कि क्लैंडस्टाइन स्ट्राइक करा जाए से भाई स्ट्राइक रो भी पॉसिबिलिटीज रही कारण आज जो डीजीएमओ लेवल कथबार्ता है परे द पॉसिबिलिटी ऑफ ए क्रॉस बॉर्डर फुल स्केल वार हैज डिमिनिश्ड क्वाइट ए लॉट इट हैज बिकम रूटीन तेणु
the only possibility of a major conflict I see only when ଯେତେବେଳେ India pin down କରିବ pinpoint କରିନବ ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର source, be it Hafiz Saeed, be it Masood Azhar, be it whosoever any corner level officer of Pakistan ISI, जदि आम डिटरमिन कलु कि he is the person responsible and we want to take him out, ताले possible the best possible is to be taken out by an air strike, सेटा भी करा जीवो किंतु जदि ताकू कोनोसी assets use करी eliminate करा जाय पारे सेटा भी करा जीवो. So that operational freedom has been given to Indian Army. That is the situation where we are now. So it's good that DGMOs have started talking so that major military confrontation is avoided and India retains its liberty, its freedom to strike at the cause of terror, the root cause of terrorism against us. So this is a fantastic situation. That's what was expected and we are now at that situation only. सर अल्प समय रहा समस्त रिएक्शन उपर आउ गोटे शेष प्रश्न विनोद सर आपन पचारि रूस यूक्रेन युद्ध आरंभ होला बेलू आमको लगुला बहुत शीघ्र युद्ध सरीज सर किंतु ये युद्ध लंबी लंबी गला तापर मोमेंट रे आम देखिलु युद्ध सरीबार ना गंध ना सर जदि ये मोमेंट रे आज दिन हुए तो टी मुस्किल हम आपण विनोद सर किंतु ये युद्ध जहाँ तिक्तता युद्ध तो आरंभ नहीं तिक्तता आरंभ होती सर लंग टर्म पर चलो ना भारत यार गोटे उचित जवाब दे पूरा पूरी समाधान करदेव सर ना ये जिनसर समाधान केवे हो पारिबनी जेपर्यंत इंडिया पाकिस्तान भितर काश्मीर बोन ऑफ कंटेंशन ही रही इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप जोटा कि मुझे सब भिन्न है भाई पड़ोसापण को योग्य नुहति. सो दीज नेबर्स आर डेस्टाइन्ड टू कीप फाइटिंग. रेस्पॉन्सिबिलिटी से देखा दे कीप देयर फाइट बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ ओपन वार because war is not in the interest of either of the countries. India powerful definitely, but it is not advisable. The best prepared armies prepare in such a manner that they don't have to fight the war. War fighting रो कोनोसी यथार्थता नहीं unless it is unavoidable. तेणु आमर जदि पर्पस जदि सर्व होची, if we can secure our nation through intelligence gathering and military preparedness, that should be the most preferred option rather than fighting a war just for the sake of fighting a war.